You can never take away the power of my It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. और जी की हाल। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड यार। हो गई। मैं कल भी आया था, कल तुम थे नहीं। स्ट्रीम तो कल भी हुई थी। ऑल गुड यार। बस सर्दियाँ आ गई है ना, थोड़ा सा ना वो स्लो हो गया है, बॉडी के फंक्शंस ना सारे स्लो हो गए हैं। ना तो बेड से निकलने का मन करता, ना कुछ करने का मन करता। तो ये चल रहा है मेरा तो आजकल, बाई गॉड की कसम। अच्छा, कल ऑफिस था? ओह, तो आज नहीं है? वीकडे आज भी यार। क्या आज थर्सडे? आज हाँ थर्सडे आज तो। ऑफिस तो आज भी होना चाहिए ऑफिस। सेंसे मिनातो का भी ऑफिस था कल। ब्रो, राइड एंड बिल्ड चल रहा है यार। लेवल 90 तो हो गई है। बस उसका टैलेंट्स को अपग्रेड करना है, और उसके लिए जो मुझे आर्टिफैक्ट्स जो चीज़ें चाहिए वो फार्म करनी है। अब वो फार्म करने के लिए मुझे कल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डोमेन जो है, टैलेंट अपग्रेड का जो डोमेन है वो कल खुलेगा। तब तक हुताओ थोड़ी सी बिल्ड हुई है, वो दिखाता हूँ मैं। हुताओ को बिल्ड करना है, क्योंकि हुताओ को मैंने कैच दे दिया है। आज भी है बट घर जाना है, सो वो कब अर्ली। ओके। हाँ यार, अल्ट्रा स्लो हो गया सब कुछ। स्लो सा लग रहा है, मतलब कि सर्दियों में ना सब कुछ जाम सा हो जाता है। कि मतलब कि ऐसा लगता है कि मतलब लिटरली कुछ करने का मन नहीं करता। यू गॉट हिम ऑल एक्सेप्ट इतो। गॉट हु ऑल? वॉन्डर मिल गया? बोलो बोलो, वॉन्डर आ गया? क्रिम्जन विच दिया? क्रिम्जन विच, हाँ हुताऊ तो क्रिम्जन विच ही था। मैंने डीलुक के पकड़ा दिए थे उसका आर्टिफैक्ट। अभी दिखाता हूँ, हुताऊ बिल्ड दिखाता हूँ अपना मैं। बस उसका एक बार वो बिल्ड हो जाए अच्छा से, एक बार हुताऊ लेवल 90 हो जाए, और क्या कहते हैं इसका जो डेथ मैच है, डेथ मैच एक बार लेवल 90 हो जाए, तो मेरी हुताऊ का जो क्रिट रेट और क्रिट डैमेज हो जाएगा 60 CR 200 CD या 196 CD, ऐसे करके दिखाता हूँ। तो ये रही मेरी हुताऊ। फिलहाल इसका अटैक 780 अटैक कम है, पर मैंने इसको HP वाली हुताऊ बिल्ड किया है। वॉन्डर, फारूजान, गोरो एंड यानफे। अच्छा, गोरो तो C2 हो गया, अच्छी बात है। तो ये देखो, ये 780 है, क्योंकि मैंने इसको HP वाला हुताऊ बिल्ड किया हुआ है। 46 186, ये लेवल 90 पे होती। जैसे मैं इसको लेवल 90 करूँगा तो क्रिट डैमेज है 196 हो जाएगा 186 से, ठीक है। और जैसे ही ये, अभी इसका 20% है, डेथ मैच लेवल 90 पे 36% क्रिट रेट देती है, तो यानी कि अभी इसमें 16% बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा, तो 16 इसमें ऐड हो गया, कितना हो गया 62 और 196, तो 62 और 196 मेरा ये हो जाएगा हुताऊ का, ठीक है। और क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट ठीक है। आर्टिफैक्ट्स ये हैं मैंने दिए हुए हैं, जो उसको यहाँ से दिखाता हूँ। क्रिट रेट वाला और एलिमेंटल मास्टरी वाला फ्लावर है। एलिमेंटल मास्टरी क्रिट डैमेज वाला प्लूम हो गया। यार डेथ मैच ना मुझे देना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा था कि अब इसको कुछ ना कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा बढ़े हुताऊ, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा। तो मुझे फिर ख़रीदना पड़ा एक बैटल पास, है ना। और अब डेथ मैच ले लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ डेथ मैच हो आगे, नहीं तो अभी, नहीं तो कल तो इसको R5 करूँगा ही करूँगा मैं, ठीक है। HP वाला गॉबलेट दिया हुआ है मैंने इसको विद ER एंड CD। HP वाला मैंने इसको, सॉरी HP वाला सैंड था, HP वाला गॉबलेट है विद CR एंड CD। और क्रिट डैमेज वाला मैंने इसको गॉबलेट दिया हुआ है विद अटैक परसेंटेज एंड HP परसेंटेज। डेथ मैच ही अच्छा है। वो जो ब्लैक क्लिफ पोल है ना, जो ब्लैक क्लिफ पोल था जो दूसरे बंदे ने मेरे अकाउंट से कर लिया, वो ब्लैक क्लिफ पोल जो है उसमें दिक्कत पता है क्या है? कहाँ गया? ब्लैक क्लिफ पोल के अंदर दिक्कत ये है कि आफ्टर डिफीटिंग एन एनिमी, मतलब कि
बहुत सारे हैं, उनमें से एक को आपने हराया तो आपका 12% बढ़ेगा एक बंदे को हरा के, और वो इसके मैक्सिमम 3 स्टैक्स हैं, तो यानी कि 12 तिया 36 हो गया, तो 36% रहेगा। लेकिन डेथ मैच के अंदर ये 16 रहता है और ये 24 रहता है, लेकिन इसको मैं R5 कर दूंगा तो इसका बहुत ऊपर चला जाएगा। ये है। हाँ, मैंने इसको 2 HP पीसेज दिए हैं। कितना डैमेज मारती है विद वेपराइज अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, ये मैंने कल रात को किया था, तो इसको टेस्ट नहीं किया, अब टेस्ट करूँगा। यार इसका बेस अटैक जो है ना कम है, लेकिन इसमें क्रिट रेट ज़्यादा है, वो मैं देखो अभी। चलो इसको टेस्ट आउट करते हैं। चलो चलो टेस्ट आउट करते हैं। हूताओ मैंने सेलेक्ट की हुई है, कहाँ जाऊँ टेस्ट करने के लिए। चलो कोई है क्या? वो रहा, उधर चलते हैं। पहले इनको हरा दूं, हरा दूं मतलब ये फोड़ दूं, क्योंकि ये बहुत दिक्कत करेंगे। ठीक है चलो। Shake it and stir. No, my sword. क्योंकि 97 ये डैमेज दे रही है, और अभी ये डैमेज इसलिए दे रही है इतना कम, क्योंकि अभी इसका वो कम है। Let me weave you a verse. Huh? Absorption test. Animal test 63. Crossover. अबे हट जा, मर गई मर गई मर गई। Think you can bully me? Enhanced animal module 7. तो इट वॉज नॉट ग्रेट, बट ठीक है। एक मिनट, अभी चैट पढ़ रहा हूँ, अभी चैट पे नजर नहीं जा रही मेरी। हाँ अब बताओ। हाँ स्टार्टिंग में इसका HP ज़्यादा था ना, और पायरो डैमेज वाला जो गॉबलेट कह रहे हो वो लगा दूँ तो बेसिकली क्या है कि मेरे पास पायरो डैमेज वाला है शायद, गॉबलेट नहीं है पायरो डैमेज वाला, HP वाला है। इसमें क्रिट रेट क्रिट डैमेज दोनों है। अगर मैं इसमें ये लगा दूँ, कहाँ गया दूसरा एक था पायरो डैमेज वाला, ये है नहीं, फिजिकल, इलेक्ट्रो, क्रायो, अटैक, HP, एनिमो, हाइड्रो, ये पायरो डैमेज वाला है। इसमें CRCD नहीं, मेरा CRCD कम हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी जो हुताऊ का E है वो उसके HP से स्केल होता है। मेरे दोस्त का एक हुताऊ फिबोनाची, हुताऊ तो यार बहुत देखी हुई है है ना, तो हुताऊ का जो E है वो HP से स्केल होता है, तो इसलिए मैंने इसको HP गॉबलेट दिया हुआ है यहाँ पे। कहाँ गया? क्यों, इसी से स्केल होगा, प्लस इसमें CRCD दोनों है, अटैक परसेंटेज भी है। बस मुझे इसको एनहेंस करना है, इसके लिए मुझे ये चाहिए, और इसके लिए आज नहीं होगा, फ्राइडे तक मुझे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये है हुताऊ का सीन। ठीक है, बीच में अगर इसके मिले अच्छे आर्टिफैक्ट तो मैं ले लूँगा, है ना। अभी जैसे कि मुझे लग रहा है बेस अटैक थोड़ा सा कम है, मतलब कि बेस क्या है, जो अटैक है 70 इज़ नॉट इनफ, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स में अगर कुछ अटैक वाला हो तो वो दे दिया HP की जगह, जैसे ये अटैक प्लूम कह रहा हूँ, है ना, जैसे कि क्रिम्सन विच ऑफ फ्लेम्स में और कुछ है ही नहीं मेरे पास। इसमें भी खाली यही है, इलेक्ट्रो डैमेज बोनस वाला। इसमें HP, क्रिट रेट, हैट, क्रिट रेट हैट डी लोग के पास है। क्रिट डैमेज जो मैंने एक योइमिया को दिया हुआ है विद एनर्जी रिचार्ज एलिमेंटल मास्टरी, और एक CD है, यही वाला ज़्यादा बेटर है ना। तो ये सीन है। ज़रा क्रायो रेजिस्वाइन के पास चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या अटैक करती है। कहाँ गई?
क्रायो रेजिस्टर नहीं थी। ये तो है कि लोगों के आर्टिफैक्ट से कुछ नहीं मिलता। जो आर्टिफैक्ट तुम्हें मिलना है वो मिलना है। तुम ये देखो कि तुम्हारे आर्टिफैक्ट से बेस्ट क्या बन रहा है। कोपियम पीसीज है ब्रो। मासानोरी को मारो। मासानोरी कहाँ पे था भैया? ये टेम्पल ऑफ द वुल्फ में मासानोरी किधर था बताओ? Witness the power of Gugwa. Rain outlines. Time to go. बहुत ज़्यादा नहीं दे रही डैमेज यार। वेपराइज डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं है। No, my sword. Stand clear. न्यू हेलो भाई, आपका हुताओ डिटेल्स शो करो। हुताओ डिटेल्स यार अभी ना कर रहे हैं हुताओ का बिल्ड। अभी हुताओ ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं है। ऑल्दो देखा जाए तो इसका वो क्या कहते हैं हो गया है, मतलब CDCR तो अच्छा ही है, लेकिन जो बेस अटैक है ना वो कम है थोड़ा। Think you can bully me? Can't handle your animal hypostasis amulet? No, my sword. तो ज़्यादा ही कम है बे। Animal test 63. See? Higher, higher, pants on fire. तो बेसिकली अपने को पता चल गया कि अपने को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्यों? EM कम है इसलिए। मासानोरीज डैमेज टेस्टिंग डॉल। अच्छा रोहित कुरेवार हेलो 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 वेलकम। बस अटैक नहीं, अरे यार वही प्रॉब्लम देखो मैं दिखाता हूँ। देखो इसका अटैक ना 780 है क्योंकि मैंने इसको मोस्टली HP बिल्ड किया हुआ है। मैं चाहूँ तो इसको अटैक वटैक वाला कुछ पकड़ा दूँ, ठीक है। जैसे कि ये HP गॉबलेट है, ठीक है। इसको मैं क्या दे सकता हूँ, ये पकड़ा सकता हूँ अटैक गॉबलेट। डेंड्रो एनिमो पायरो डैमेज वाला एक ही है मेरे पास ये। द लाइट्स इन द बैकग्राउंड आर ग्लिचिंग विद माई हेड। ऐसा क्यों? यार ज़्यादा बताओ, मेरा कट गया वो वेपन बैनर पे रेड हॉर्न पे जगह पे मारो ना। अकेला फवोनिया मिलकर काट दिया। या मेरा भी कटा है वेपन बैनर के ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लूट मिलती है। अब 2 पायरो कैरेक्टर्स यूज़ करो, वो तो है, लेकिन यार टीम जब ऐसी बनाई हुई है ना, मैंने टीम बनाई हुई है उसके लिए, क्राउड कंट्रोल के लिए। बेसिकली सुक्रोज इसमें यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इन दोनों से काम हो जाता है मेरा, ये और ये इन दोनों से काम हो जाता है। और जो बचे कुचे फिर उनको इनसे और इससे निपटा देता हूँ। एक मिनट, क्या HP की जगह ये में होना चाहिए? ये अरे मेरी हुताओ देख लो यार। तुम्हारी हुताओ देख तो लूँगा मैं। देखो हुताओ इस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है बिल्ड करना, ठीक है, लेकिन अपने पास आर्टिफैक्ट होने चाहिए ना। अगर अपने पास आर्टिफैक्ट ही नहीं है तो मैं किसी की हुताओ देख के करूँगा क्या? समझ रहे हो?
यार यहाँ पर EM का गॉबलेट नहीं है मेरे पास। फिजिकल डैमेज है, इलेक्ट्रो डैमेज है, क्रायो डैमेज है, अटैक गॉबलेट है। ये देख के देख सकता हूँ मैं कि थोड़ा अटैक भी बढ़ जाएगा, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज ही बढ़ रहा है। ठीक है, ये देख के देखता हूँ एक बार। रेजर तो मैं आजकल यूज़ कर नहीं रहा हूँ, ये देख के देखता हूँ। चलो दोबारा क्रायो रेजिस्वाइन के पास चलते हैं। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। पायरो डैमेज बोनस कहाँ है? नहीं है। पायरो डैमेज मैंने गॉबलेट दिया ही नहीं हुआ इसको। कहाँ गया आर्टिफैक्ट? पायरो डैमेज ये है, पर मैंने अभी ज़्यादा बिल्ड नहीं किया क्योंकि इसमें CRCD नहीं है। पायरो डैमेज का मुझे कोई ढंग का सा मिला नहीं। टाइम पीस में HP ही है। टाइम पीस में HP है और यहाँ पे दोनों ट्राई करते हैं। अभी मैंने इसको क्या पकड़ाया है? मैंने इसको अटैक पकड़ाया है CRCD, उसके बाद मैं पायरो डैमेज वाला गॉबलेट पकड़ाऊंगा। ठीक है, दोनों देखते हैं अटैक क्या आता है। ठीक है, चलो चलो दोबारा से क्रायो रेजिस्वाइन चलते हैं। या मासानोरी जाएं? मासानोरी कहाँ पे है पता है किसी को? अरे मतलब कि पता तो मुझे भी है लेकिन मैं भूल गया। मासानोरी कहाँ है? मासानोरी ड्रैगन्स बेन है आपके पास शायद। मासानोरी के पास चलते हैं एक बार पहले। बेसिकली वही है कि मुझे इस टाइम क्रिट रेट और क्रिट डैमेज ठीक रखना है। ठीक है, कोई भी ऐसा मेरे पास अगर आर्टिफैक्ट आता है जो मुझे निकलता है विचेस फ्लेम के अंदर, जिसके अंदर अटैक इंक्रीज़ हो, थोड़ा CR इंक्रीज़ हो, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं तुम्हें अपना CRCD दिखाऊँ ना तो देखो, ये देखो 35 CR विद 197 CD ये मेरे पास अभी है। और ये क्यों है? क्योंकि मैंने अभी इसका वो चेंज किया है। कहाँ गया? ये चेंज किया है, इसको ये दे दिया मैंने। ठीक है, अगर ये इसमें रहता, इससे पहले क्या दिया हुआ था मैंने? ये दिया हुआ था, तो उसमें HP था। बहुत लोग मुझे ये कह रहे हैं होमा पुल करने के लिए। अभी होमा को आने तो दो, उसका देखेंगे कि क्या सिचुएशन होती है। अरे मासानोरी कहाँ है? यहाँ पर है क्या? ये तो मैग्यू किंग की है। मैं एक्चुअली राइडन के लिए पुल करने वाला हूँ। हुताओ पे 60 190 EM 100 HP 30K। देखो जब राइडन आएगी ना तब देखा जाएगा। भाई यार कोई मुझे बताने वाला है मासानोरी कहाँ है, या मैं खुद देखूँ मासानोरी? 2 clients, 3 clients. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. यहाँ पे ये कौन सा आइलैंड है बे? याशियोरी पे। याशियोरी थोड़ी है, यहाँ दिखा रहा है इसके ऊपर, यहाँ से पास में है। अच्छा याशियोरी देख लिया मैंने। ओके किधर जाना है? यहाँ। ये रहा। Rain outlines your fate. Let me.
Shake it, and absorption test. Animal test 60. भाई साहब असली डैमेज तो सुक्रोस कर रही है असली डैमेज तो. Time to go. बहुत दूर तक जाती है. Think you can bully me? Swirl, mark two. See? Go. Scratch. Rain cutter. Cross over. Shake it and stand clear. Absorption test. Time to rain outlines your fate. Scratch. Higher, higher, pants on fire. Is it और my time? Animal test 6308. Stand clear. Enhanced animal mod. दोनों बकरे साइड साइड में रहते हैं. अब कितना कैरेक्टर है 5 स्टार और डैमेज कम है तो मुझे ही पता है डैमेज कम है. मेरे पास 5 स्टार कितने कैरेक्टर्स हैं? मेरे पास 5 स्टार हैं ये हुताओ, राइडन, अपना क्या कहते हैं डीलुक, कोकोमी, नाहिदा, योइमिया, मोना, जीन, चीची, टाइनारी. ये फिलहाल तो ऐसे बिल्ड करना है यार. तो इसे ट्राई करूँ मासा नोरी को. कहाँ गया पार्टी सेटअप? ये दूसरी टीम है मेरी. ठीक है इससे ट्राई करते हैं मासा नोरी को. 1 मिनट पहले थोड़ा हील हो जाए. मेरी बेचारी शानलिंग मरी हुई है. मासा नोरी क्वेस्ट काफ़ी बढ़िया थी. हाँ यस इट वाज. करेंगे यार हुताओ को बिल्ड करेंगे. फिलहाल तो मेरा सारा फोकस राइडन पे है. आज क्या कहते हैं वो नहीं था. कल फ्राइडे को क्या कहते हैं डोमेन ओपन होगा तब राइडन के जो टैलेंट्स है अपग्रेड करने मुझे. अबे Shall we spar? Yes. Boba, get them! There is no escape. No, my sword. Witness the power. Out of the frying pan, into the fire! Everybody stand back. Shine down, torn to oblivion. There is no escape. Nice and spicy! Let me weave you a verse. Inazuma shines eternal. Shine down. Teamwork is dreamwork. Rain outlines your fate. Remove all obstacles. Now you shall perish. इसका डैमेज कैसा था? और ये तो भी ठीक से बिल्ड भी नहीं है. ये ज़्यादा इजी थी ना.
और तुम्हें राइडन का अपना वो दिखाऊं, स्टैट्स दिखाऊं तुमसे, देख के हंसी आएगी। मेरे राइडन के स्टैट्स देखो, 1982 सिर्फ ER 278 है, और अभी क्या कहते हैं जो टैलेंट्स हैं वो इसके 671 है। अभी एक बार इसको क्राउन कर दूं, इसको क्राउन कर दूं इन दोनों को, फिर देखना। राइडन का डैमेज सही है, हाँ राइडन का डैमेज अच्छा है। एनीवेज चलो आज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आज की प्रक्रिया है, पहले कमीशन क्वेस्ट है, ठीक है, यस, कमीशंस पूरी करते हैं, उसके बाद स्टोरी क्वेस्ट। अभी तो कैच भी मेरी R2 पे है, एक बार कैच R5 पे हो जाए उसके लिए भी यार बहुत ज़्यादा फिशिंग करनी है, सोच सोच के दिमाग ख़राब होता है। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, हमें कमीशंस करनी है। कमीशन करने के बाद हमें क्या कहते हैं डोमेन करना है, मोमीजी डाइड कोट इसके आर्टिफैक्ट्स के लिए। और उसके बाद वॉन्डरर की स्टोरी क्वेस्ट जो है आगे बढ़ानी है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो डबल क्राउन करने वाला हूँ राइडन को। करो यार, मैंने भी करना है, मैंने भी करना है। कौन है वे उधर, पानी में कौन खड़ा है भाई? सुनो, सुनाओ। यू कैन नेम योर वॉन्डर बाय द वे। हाँ मैंने सुना है कि क्वेस्ट के बाद वो आता है, क्या कहते हैं, एक ऑप्शन आता है वॉन्डर को नेम करने का। मैंने बहुत ही बढ़िया नाम सोचा हुआ है वॉन्डर के लिए, आज सुबह मेरे दिमाग में आया। सो यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि मैं उसका क्या नाम रखता हूँ। मैं 74 पिटी पे था, 10 पुल्स थे मेरे पास, फिर क्या हुआ? मैं आपकी स्ट्रीम देखते देखते BP कलेक्ट करना गया और गलती से विश ओपन हो गई। अरे गलती से? अरे तो गलती से विश ओपन होगी तो कम से कम एक ही विश हुई होगी ना, या बहुत सारी विश कर डाली गलती से? आई वॉन्ट टू नेम दाढ़ी मूछ सो बैड। अच्छा नाम है, पर मैंने कुछ और नाम सोचा हुआ है। 10 पुल्स हो गया, अच्छा। ओ ये तो गलत हो गया यार। वॉन्डर मिल गया इधर तो यार फिर एक काम करो ना, वॉन्डर को फिर बिल्ड करना शुरू करो। मशरूम कहाँ है बे? डोंट टेल मी मेरा मशरूम नहीं है। और मशरूम यहाँ क्यों होंगे? मशरूम तो यहाँ होना चाहिए ना, इंग्रेडिएंट्स में, या यहाँ पे? ये है मेरा 143, ये तो बड़े, ये देख क्यों नहीं रहा? अबे मशरूम यहाँ, what the hell is this? मशरूम ये रहा। स्पेशल मशरूम क्या होता है बे? अरे कोई बात नहीं, मिना तो यार निकल गया तो निकल गया। भाई पहले मुझे बता स्पेशल मशरूम क्या होता है अभी सी? अच्छा तुम न्यू हो और तुमने अपनी अकाउंट का नाम ही न्यू रख दिया, बहुत बढ़िया। चेक इन फूड मेन्यू। अरे कौन सा फूड मेन्यू भाई?
लुक फॉर बेट मटेरियल्स। यार अब कौन सा ये रहा ना फूड मेन्यू के अंदर स्पेशल। ओहो, स्पेशल मशरूम क्या होता है मुझे को ये बताएं। मशरूम फाउंड इन द वाइल्ड, अभी स्पेशल कहाँ से लेकर आऊँ मैं? ये मुझे वो करना पड़ेगा, कुक करना पड़ेगा क्या? ये कौन सा है? ये नई क्वेस्ट है, ये वाली क्वेस्ट है, यही है। अगर कुछ उल्टा सीधा नाम रखते तो वो तुम्हारे अकाउंट को बैन कर सकता है। यार उल्टा सीधा नाम तो नहीं है जो मैंने सोचा है, बड़े कॉमन इंडियन नेम है। कोई नहीं, आने दो, उस पार्ट को भी आने दो, तब देखी जाए। इसे डिफीट करना पड़ेगा क्या? Boba, get them! No, my sword. अरे अच्छा, आ गया स्पेशल मशरूम आ गया। ओके चलो गुड, इसे हराना था। आई डोंट नो, मैं अभी तक एला मस्क के अचीवमेंट के पीछे भाग रही हूँ। एला मस्क का कौन सा अचीवमेंट है बे? एला मस्क का भी कोई अचीवमेंट है? एक तो वेट यार, वेट 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 वेट, ये बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। अब सही है, हाँ अब सही है। अच्छा, हिलीचल ट्रांसलेटर वाला अचीवमेंट वो तो कब का हो गया? वो तो बहुत पुराना अचीवमेंट है, अब तक कैसे नहीं हुआ? नेक्स्ट पैच में फर्स्ट बैनर हुताओ का है, तो भाई अपने अब देख लो क्या करना है। अब मैं पहले अगर करूँगा राइडन के लिए पुल, फिर सेव करूँगा प्रीमोस और सारा, और फिर हुताओ के लिए पुल करूँगा। Kavyan catches a wet package. Wow. Kavyan is the Chad. अरे बस कर भाई, तू डेली कमीशन है या स्टोरी क्वेस्ट? अरे मिना तो इतना मत सोच भाई, इतना मत सोच, इतना सोचेगा तो हो गया काम। अब हो गया 10 पुल में क्या ही होता है, कोई बात नहीं, हो गया। मेरा सोचो ना, मेरे तो 6000 प्रीमोस कितने थे, सारे उड़ा दिए भाई ने। सारे उड़ गए, दोबारा स्टार्ट किया 0 से मैंने। पहले इनसे लड़ें आगे जाकर, ये क्या करें? पहले इनसे लड़ते हैं, बहुत दिन हो गए। There is no escape. Out of the frying pan, into the... Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. कौन है? आ जाओ सारे एक बार में, आओ इधर आओ, इधर आओ। बाय। Torn to oblivion. Shine down. Boba, get them! I'm going in. अरे इस जगह जरा एक फ्लावर लगा दिया जाए कि यहाँ पे
मेरा यार माउस का व्हील ख़राब हो गया, जूम आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। एनीवेज, ब्रो पूरी पिटी उड़ गई यार। तुमने वो वीडियो देखा जो मैंने अपने डिस्कॉर्ड पे शेयर किया था? बिल्डिंग पिटी इज़ अ लाई, वी टेल आवरसेल्व्स। हाँ सही कह रहा, अल्ट्रा सही कह रहा है, पिटी बिल्ड करना बंद करो। बस करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ मोदी जी के। अरे अरे अरे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। There is no escape. तो अंदर ही घूम रहा है, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। मगरमच्छ बनाए उन्होंने, बहुत सही है। थोड़ा आगे आओ भाई, इधर आओ, पीछे पीछे से नहीं लड़ने का, आगे आओ, शाबाश। Shine down. ऊपर कौन है ये? There is no escape. क्या रडन मारते मारते ना पीछे ले जाती है बंदे को। शुरुआत कहाँ से की थी और कहाँ पर है? 3.4 का अपडेट मस्त होने वाला है। अबे ये अपडेट तो पूरी कर लो पहले, अब तक तो इसी पे ध्यान नहीं दिया ठीक से। ओहो, We all got monsters inside of us. See more than feel like a hole in our centers. Want no one to end, but loading when times are rough. Lining up and never run away. Times of love can stop the suffocate. Find the guts when I'm feeling hollow. When I'm staring down on my own mother's grave. No, I'm used to elf but never lose myself. Can't win, but always choosing help. When I'm lost my soul, don't know who's the helm. वाह ये तो बड़े रेजिलिएंट टाइप के हैं। Nice and spicy. Illusion shattered. टीसीजी में ग्राइंड चल रहा है यार, टीसीजी में तो ग्राइंड मुझे भी करना है। इसे हराना है क्या? डोंट टेल मी। Eat this. Let me read you a verse. Now you shall perish. अब तक न्यू क्वेस्ट टच भी नहीं किया भाई। मैं तो पहले न्यू क्वेस्ट कर रहा हूँ, वो क्वेस्ट खत्म होगी तब मैं टीसीजी करूँगा। मुझे टीसीजी की कोई जल्दी नहीं है। अरे चलो यहीं चलते हैं, देखते हैं। अपने को टीसीजी की कोई जल्दी नहीं है। कहाँ है? ऊपर।
और कुछ लोगों को लग रहा है कि जो भी जो क्वेस्ट चल रही है ना, इंटरल्यूड क्वेस्ट जो चल रही है, ये राइडन की राइडन कह रहा हूँ, ये वॉन्डरर की स्टोरी क्वेस्ट है। ये वॉन्डरर की स्टोरी क्वेस्ट नहीं है। इंटरल्यूड क्वेस्ट जो होती है वो स्टोरी क्वेस्ट नहीं होती, तो धोखे मत रहना। इसकी स्टोरी क्वेस्ट अभी आएगी, वॉन्डरर की आनी चाहिए, इतना मुझे लग रहा है। Chase the weasel thief away. Oh. ये फालतू में घुमाते रहते बंदे को। There is no escape. No, my sword! Everybody stand back! Inazuma shines eternal. Shine down. Now you shall perish. कमीशंस पूरी, कमीशन पूरी। अब कमीशन रिवॉर्ड लेते हैं और उसका चलते हैं सीधा कहाँ पे, मोमिजी डाइट कोड, आर्टिफैक्ट फार्मिंग। अब यार गेम में टोटल कितने अचीवमेंट है? 1000 के करीब है यार, ऑलमोस्ट 1000 है। और ऐसा कि उनका फाइनाइट नंबर नहीं है, कैसे भी कभी भी आते रहते हैं। Add asterisk. Thank you for Add asterisk. $857 है टोटल। ये तो बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे और क्या कहते हैं वो आने शुरू होंगे, रीजन्स आने शुरू होंगे, 1000 के ऊपर जाएंगे, बड़े आराम से जाएंगे 1000 के ऊपर। एनीवेज चलो अब चलते हैं डोमेन। Inactivity, sir. हमें भी बुला लो।
कहाँ गायब हो गई है? भाई ये कौन है जिसका अब तक ये आइलैंड वो नहीं है? वाह, कौन बंदा है ये जिसके वर्ल्ड में हम आए हैं जिसने अब तक अनलॉक नहीं किया हुआ? मेरे इतने अचीवमेंट्स पूरे नहीं हुए यार। ऐड मी, ये तो भाई कुछ अलग ही बंदा लग रहा है। छोड़ो, टाइम वेस्ट करने वाले तो बहुत है। और जैसा ही बंदा हो, मतलब Think we can run some tests? चलो तुम तो स्टार्ट करो। किया? ओके। Witness the power of Gugwa. Know my sword. Cross over! All hail! Go! Higher, higher, pants on fire! For Cross over! Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. All hail! Higher, higher, pants on fire! Please, step back! Let me lead you a verse. Blaze over! Cross over! बहुत देर लग रही है। अरे बाहर चले गए सारे। Think we can run some tests? इसको आर्टिफैक्ट चेंज करूँ। पहले वाला देता ना, फायर डैमेज देता हूँ। स्विच कंफर्म।
Sit. सबके पास कोपीएम बिल्ड है. Every journey has its final day. Don't rush. Go! Huh? Born of power. Higher, higher, hands on fire. Time to go. बहुत ही मिनिमल इफेक्ट के साथ लड़ाई हो रही है. Next on the agenda. This is long overdue. Ooh, 50,000. No, my sword! Order guide. Let me weave you a verse. Cross over. Blaze over. This is order. Time to go. Rain cutter. I will have order. Gather. Higher, higher, hands on fire. डैमेज कम्स फ्रॉम टैलेंट्स. हाँ वो तो है यार. क्राउन करना है अभी. क्या कहते हैं, क्राउन के लिए जो आर्टिफैक्ट चाहिए वो भी फार्म करने हैं. वो डोमेन आज ओपन नहीं है. वो ये एक बार क्रिट करता है ना, वही काफ़ी हो जाता है. पहले 50 किया, फिर 86 किया. Go. Go. Let me. This is long Cross over. See? Go. All hail. Higher, higher, hands on fire. Blaze over. Time to go. Go. Rise. Cross over. See? Go. Time to go. Take a rest. Leave it to me.
Order guide. Let me weave you a verse. ये दोनों यहाँ पे से अकेले लड़ रहे हैं. Body. Time to go. Go. बहुत देर लग रही है यार उसको. मेरा अकाउंट रिव्यू कर दो. हाँ आईडी दो. आईडी दे दी. ओके. पक्का फ्लेक्स है. मोस्ट लोग फ्लेक्स करानी तो आते हैं. देखते हैं. Think we can run some tests? आईडी देख के पता चलेगा ओल्ड आईडी है. नहीं मेरे से नहीं है. 8368 है ना. मेरी 8328 है. ये आईडी 8368 है. मेरी 8328 है. तो मेरी इससे भी ज़्यादा पुरानी है. मेरा तो अकाउंट फ्लेक्स नहीं है किसी भी एंगल से. मेरा किसी भी एंगल से फ्लेक्स अकाउंट नहीं है. सोचो. एक मिनट दिखाओ. 8368 5 3675. नहीं है. देखते हैं भाई. अभी पता लगेगा. AR 58. लो. फ्लेक्स नहीं करना है बट हो जाता है. चैट में कुछ यहाँ कुछ. वाह. फ्लेक्स नहीं करना है पर हो जाता है. चलो राइडन से शुरुआत करते हैं. 1600 अटैक. फ्लेक्स नहीं करना है पर हो जाता है. R5 कैच. फ्लेक्स नहीं करना है हो जाता है. सही बात है. सिंगल क्राउन. गलती से फ्लेक्स हो गया. हाँ यार सही बात है. गलती से फ्लेक्स हो गया. ज़्यादा नहीं करना था. गलती से फ्लेक्स हो गया. क्रिट रेट थोड़ा कम है. embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. क्या दिया हुआ है इसको तुमने? समिट शेपर. अच्छा जी. क्यों? अयाका कौन सी शील्ड यूज करती है? अच्छा शील्ड टीम में डाला होगा अयाका को. ट्रिपल 9 एलिमेंटल मास्टरी. फ्लेक्स नहीं करना है पर गलती से हो गया. ये मुझे आर्टिफैक्ट देखने ज़रा. 77. ओके. 82. 187. 187. 187. यहाँ मेरे को एक EM पीस नहीं मिल रहा है. यहाँ भाई के बाद 3 है. वो भी CRCD वाले. अरे कुछ तो यार खुदा का खौफ रखो. बताओ. कुछ तो भगवान का खौफ रखो भाई. हाँ यू में ठीक है. ट्रिपल क्राउन बहुत बढ़िया. फ्लेक्स नहीं करना हो जाता है. होता है यार. ऐसा होता है. मैंने बहुत देखा ये. What was that? Oh. ये शाउ क्रिट नहीं करता भाई. क्रिट करता भी Take a है. look. कुछ लोग कहते हैं यार हमारा क्रिट रेट जो है 90% है 100% है. क्रिट ही नहीं करता भाई. क्रिट करता है. ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिट ना करे. Ha, I'm here. ऐसा हो ही नहीं सकता क्रिट ना करे. Think you can bully me? Animal test 6308.
Stand clear. Ring cutter. Animal test 6308. No, my sword. Scratch that. Diana special. Absorption test. Animal hypostasis emulation. Stand clear. Huh? I am outplayed. सुक्रोज से फिनिश करेंगे ऐसे. Scratch that. Look at you, booze hound. Animal test 6308. Enhanced animal module 75. उससे काफ़ी कम था यार. HP काफ़ी कम था वैसे भी. लॉली नाहिदा देखो मस्त बनाया है. नाहिदा को क्या बना दिया तुमने. $1047 सैक्रिफिशियल. EM भर भर के EM दिया हुआ है. बहुत बढ़िया. यार मुझे क्यों नहीं मिलते EM आर्टिफैक्ट्स. मैंने किसी की भैंस खोल दी क्या. मेरी सुक्रोज बेचारी कब से 613 पे अटकी हुई है. मुझे इसका आर्टिफैक्ट नहीं मिल रहा ढंग से. मेरे पास एक और रह गया है. वो क्या कहते हैं कंडेंस रेजिन. एक और रह गया शायद. है कि नहीं है. एक मिनट. एक कंडेंस रेजिन और है. चलो ये भी यूज़ कर लेते हैं. Think we can run some tests? Whenever you need me, I'll be there. स्कारामुश नहीं लिया. किसने. ये काजुआ वाले बंदे ने. है कहाँ. ऊपर ही खड़ा हुआ है अब तक वो. आजा भाई. अब आया. अब होश आया उसे. अबे ये कहाँ जा रहा है. अच्छा आ गया. करे शुरू. All hail.
Crush your enemy. Witness the power of good तुम ही रहो भाई Rain वैसे. outlines your fate. My contract goes एक और गई. unfulfilled. वाह. Think we could run some tests? हुताओ का ना यही सीन है यार. हुताओ को ना बहुत शील्ड वील्ड करके रखना पड़ता है, वरना हुताओ का पॉइंट नहीं होता. चलो खुद ही करता हूँ. जैसे थैनोस बोलता है ना, फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ. सो फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ. देखते मैं खुद कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता. हो तो जाना चाहिए. Let's go, let's go. लेट्स गो लेट्स गो. Shake it and stir. Stand clear. Think you can bully me? Animo test 6308. No, my sword. Swirl, Mark 2. Let me weave you a verse. Cross over. Shake it and stir. Absorption test. Animo test 6308. Time to go. See? Stand clear. Animal hypostasis and you. Witness the power of Gugwa. Think you can bully me? छोटा तो खुद ही कर लेता. उतना टाइम मुझे वैसे ही लगा. ओके, ये ब्लूम दे सकता हूँ मैं राइडन को. यहाँ पे ER कहीं नहीं है. क्रिट रेट है लेकिन ER नहीं है. तो अगर मैं ये प्लूम दे दूँ, क्या कहते हो? इसमें तो ER ज़रा भी नहीं है. अटैक परसेंटेज है, एलिमेंटल मास्टरी है, क्रिट रेट है. थोड़ा सा मुश्किल है. ये देना चाहिए या नहीं? वही तो ना, क्रिट नहीं है. क्रिट रेट हट जाएगा. EM भी काम आता ही है. छोड़ो, विल कीप ऑन फार्मिंग. Wanna come over for tea? चलो यार, ये सब तो हो गया. अब क्या बचा है? अब चलते हैं वापस अपने स्टोरी क्वेस्ट की तरफ.
लेट्स गो स्टोरी क्वेस्ट. All these promises of love can leave you broken. Hear the snapping bows, the discordant chords run parallel to melodies and happy tones. Maybe I was scared of what it would be like to stand alone. The crimes are not my doing. स्टोरी क्वेस्ट के टाइम पे गाना बंद. ओके. ओके. To Amanoma Smithy. Ah, it's been a while. Of course. Go ahead. Oh. Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches. Amenoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju. The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they became 5 distinct traditions. Most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline, and for a long time, only the Amenoma branch kept its art alive. But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain of the original Gokuden 5. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. यहाँ तक तो स्टोरी सही है. Oh, yeah, we were. Paimon remembers that now. We learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then, too. It seems like such a shame. रीजन क्या था इनके डिक्लाइन के पीछे? That, my friends, is a tragic tale indeed. In fact, this was not made known to me for most of my life. All these years, I knew of those great clans' demise, but never the cause. Only recently, when the question was on my mind, did I ask Kaedehara Kazuha about this. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokuden, it was right that I should know the truth. There is no harm in telling you, but I must warn you. It is a dark and sorrowful tale. हाँ इतना हमें पता आगे बता भाई. The Raiden Gokuden were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith. Okay. Vengeful? Why? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The furnace quickly stabilized, but neither of them made it out. The smith's death, वो furnace though हाँ. heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphaned son was left to fend for himself, and grew up deeply resentful at the world. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty Shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred.
Generation after generation bore this grudge, living in utter misery. Alas, if only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer, and yet he could do nothing to change it. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokuden. In doing so, he sought to vent his pent anger and shake the very foundations of Inazuma's forging industry. In his fury, he murdered indiscriminately, killing even bladesmiths from the Hyakume clan which he belonged to. His goal was absolute, the devastation of all of the Raiden Gokuden. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. That is why the Kaedehara clan and their Ishin art survived that day. I suppose they were the lucky ones, under the dire circumstances. ओरिजिनल जो स्टोरी थी राइडन गोकुडेन की, उसमें स्कारामूश ने अटैक किया था सबको, क्योंकि उसको लगा था कि जो ये नीवा था उसने उसको बिट्रे किया, पर अब उसको सच पता चल गया कि नीवा ने बिट्रे नहीं किया था बल्कि डॉक्टर था। तो नीवा की स्टोरी तो उसने छोड़ दी, लेकिन उसने अपना नाम मिटाकर कोई और बंदा अपनी जगह पर स्टोरी के अंदर बता दिया कि इसने अटैक किया था। Was there anything else you wanted to ask? Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. We spoke for a while over some tea. He seemed well. My pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit too, right? Your expression says it all. You can't hide anything from Paimon. कौन सी स्टोरी है? अरे जो नई अभी स्टोरी आई है यार, वो वाली इंटरल्यूड, जो आर्कॉन इंटरल्यूड क्वेस्ट है वॉन्डरर की। On to the next stop. Lead the way, traveler. कोई Paimon न्यू will आएगा be 3.3 में? right हाँ, behind you. इंटरल्यूड चैप्टर होता है बेसिकली। ये चैप्टर ख़त्म हुआ अभी हमारा सुमेरु का, ठीक है? तो सुमेरु का चैप्टर जो ख़त्म हुआ है आर्कॉन क्वेस्ट, और जो फॉन्टेन की आर्कॉन क्वेस्ट स्टार्ट होगी उसके बीच में एक इंटरल्यूड चैप्टर होता है। तो ये इंटरल्यूड चैप्टर चल रहा है। याशीरो कमीशन जाना है, यानी कि हमें मिलना है कामिसातो से, अयाका से मिलना है, अयाका से। हाँ, उसका वो इरिमुंसुल को मॉडिफाई कर नहीं सकता, इरिमुंसुल को मॉडिफाई कर रहा है। उसमें इतनी थोड़ी पावर है कि वो, जैसे कि नाहिदा ने रुख देवता के बारे में भुला दिया ना सबको, उसी तरीके से ये भी अपने आप को भुलाना चाह रहा है कि मैं अपने आप को क्या कहते हैं भुला दूँ, और वो उसने कर दिया है। और ऑब्वियसली हमारे ट्रैवलर है, सिर्फ उसी को याद है ये सब। We're here. This is the Yashiro Commission's headquarters, so... Traveler, it's been a while. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. Are they out on business? The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. We'll be heading in then. Thanks. टीसीजी कार्ड क्वेस्ट में ऑलमोस्ट 2 के प्रीमोस मिल रहे हैं। Hello, dears. Is there something you want to say? भाई ये पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मुझे पता ही नहीं था। 2000 प्रीमोस मिल रहे हैं भाई, जल्दी खेलनी पड़ेगी टीसीजी। Of course, traveler. Yes, I know who you are. 2000 प्रीमोस। Miss Kamisato has told me about you. What would you like to know? ऑब्वियसली मिल रहा है, उन्हें अपनी गेम भी तो आगे बढ़ानी है ना, वरना कोई क्यों खेलेगा? कार्ड गेम सबके
इंटरेस्ट की चीज़ होती नहीं है. ऑल्दो मुझे इंटरेस्ट है कार्ड गेम्स में क्योंकि मैं लेजेंड्स ऑफ रूनटेरा वगैरह खेलता रहता हूँ, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा वो भी इंटरेस्ट है, प्लस मेरे को वो भी है, क्या कहते हैं, नॉलेज भी है कि कार्ड गेम्स कैसे काम करती है. Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the commissioner's behalf. मैंने फाइनली आज 2 महीने के ब्रेक के बाद फिर से जिम ज्वाइन कर लिया, तो आज शाम से मेरा जिम स्टार्ट होगा फिर से. यस. बॉल वाला गेम भी आएगा. अरे वो तो टेम्परेरी गेम्स है, टीसीजी परमानेंट है. As for the commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although he does seem to be in a rather good mood these days. So pretty much business as usual in the Yashiro Commission, huh? Very much so. Very much so. वी गो जिम. यस, वी गो जिम. अरे मैं तो जिम जा रहा था. मेरा वेट 96 kg था लास्ट ईयर, ठीक है. वो 96 से मैं 81 kg पे ले आया था, और मेरे को कम करना था, मतलब कि ऑलमोस्ट 75 तक जाना था. 96 से 75, 81 आ गया था. फिर उसके बाद बैक में कुछ पेन होने लगा और बहुत सारी चीज़ें होने लगी. डॉक्टर ने मना कर दिया 2 महीने के लिए, तो अभी 2 महीने से नहीं किया मैंने, वरना अब तक 75 आ चुका होता. जैपनीज़ ट्राई करो. जैपनीज़ क्या ट्राई करूँ? Be more specific, please. Well, got any more questions? You're very welcome. In fact, Pinball I के गेम में भी love 1K प्रीमोस nothing मिलेगा. more than दे दो, for हाई दे you दो. to come and visit more often. अपने को प्रीमोस But चाहिए. I'm sure you must be far too busy to have time for that. यार जैपनीज़ वॉइस ना मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, और मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ना इस गेम को उसी में खेल रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर, ठीक है. जैपनीज़ अच्छी है, आई नो, लेकिन अब मुझे ना आदत नहीं है इन कैरेक्टर्स मुझे जैपनीज़ सुनने की. एक और दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होता है, कोई क्वेस्ट चल रही होती है, उस क्वेस्ट में जैसे सपोज करो मैं लड़ रहा हूँ, पीछे से डायलॉग चल रहा है और नीचे सबटाइटल आ रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि मैं वो फाइट करूँ, मैं नीचे के सबटाइटल देखूँ या मैं वॉइस लाइन सुनूँ. तो क्या होता है, सबटाइटल देख नहीं सकते अगर आप फाइट कर रहे हो, तो वॉइस लाइन से ही आपको पता चल जाता है कि स्टोरी क्या चल रही है. और मुझे स्टोरी में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही रखता हूँ उसको. बहुत सारे रीजंस है यार. Miss Kamisato talks about you all The slime, time. hello. She seems so thrilled to have you as a friend. Vadakkam, And she's how? always saying how talented you are and how much she admires you. Admires you. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So, you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. जेपी फनिया राइडन जब बर्स्ट यूज करती है तो बोलते ये ले भिखारी. ऐसा ही क्या, ये ले भिखारी, मतलब कुछ तो ऐसा बोलती होगी जो जापानीज में होता है, लेकिन सुनने में ऐसा लगता होगा ये ले भिखारी. C6 Noel versus C0 Ito, who's better? हाँ, टफ क्वेश्चन. आई विल स्टिल से यार देखो, बिल्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन बिल्ड. तो बिल्ड बताओ किसकी अच्छी है. I mean it. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away. कोई भी बिल्ड नहीं है, इतो इज बेटर. इतो बेटर है, नो डाउट. The commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. But given the opportunity, he always prefers to dine here. They say it's because Toma is a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond of home comforts.
They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. दादी तो कुछ ज़्यादा तारीफ कर रही है The भाई. way one would talk about dear old friends around whom one can truly be themselves. अरे दादी इतनी तारीफ कर रहे हो, अपनी लड़की भी आनी है क्या हमसे? हैं? Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. अरे स्ट्रीम पे आ जाओ. लोग पीछे डिस्कॉर्ड में बातें करते रहते हैं. मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. जो बातें करनी है यहाँ कर लो. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. और यूं ही मैं बोलती है भीख दे. Come on यार, ऐसा तो नहीं होगा. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy so much. So, in the future, Festival if you time, she ever says, do हाँ. have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your company. Wonderful. Thank you. रोल टॉम क्या है भाई? Paimon likes it here too. Also, you were saying something about the food here being really great. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Of course. You're always welcome. Alright, goodbye for now. Where are we going next? Great! Goodbye, ma'am! Don't worry, we'll see ourselves out. All right then. Take care now. बिनों से मिले जा रहे Hope हैं. to see you soon. मजाक नहीं कर रहा. यूं ही में रेडन ऐसे बोलती हैं भाई. थोड़ा तो मुझे मजाक ही लग रहा है सही बताऊं तो. Not gonna lie. एक मिनट रुकना ज़रा. Okay. Oh, are you two leaving already? सेटिंग्स में एक सीक्रेट अचीवमेंट है. अच्छा ऐसा क्या क्या है? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. ततारा सुना जाना पड़ेगा. ततारा सुना. चलो अब ततारा सुना चलते हैं. वॉल्यूम अप एंड डाउन वाले. एक दिन ना या जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना तो मैंने बोला हुआ 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर मैं स्ट्रीम करूँगा. 24 आवर्स की स्ट्रीम होगी. 24 घंटे स्ट्रीम. एक स्ट्रीम 24 आवर्स की होगी. उसमें ना सारी की सारी जो वर्ल्ड क्वेस्ट है ना, ये मतलब जो अचीवमेंट क्वेस्ट हैं, इन्हें पूरा करूँगा बैठ के मैं. अब एक बीच में खड़ा हुआ है हावियर. Well, here we are. But what are we looking for? Something? Or some... Do my eyes deceive me, or is that the Traveler and Paimon? Yes. Xavier? What are you doing here? Xavier, Xavier नहीं.
I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? We have some questions and thought you might be able to help. Now you can hear Paimon wala achievement. Paimon wala achievement कौन सा भाई? रचित वर्मा, कोकोमी स्टोरी क्वेस्ट बोरिंग AF. कोकोमी स्टोरी क्वेस्ट यार वो बोरिंग नहीं थी. जहाँ तक मुझे कोकोमी की स्टोरी क्वेस्ट याद है ना, इट वॉज नॉट बोरिंग, इट वॉज वेरी वियर्ड. कुछ ज़्यादा वियर्ड थी. मुझे ना डाइजेस्ट हुई थी कोकोमी की स्टोरी क्वेस्ट. Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. कोकोमी की भूल गए. अरे कोकोमी में वो था ना जो लड़ाई होती है दोनों के बीच में, कूजो और इसके बीच में फटुई के कुछ एजेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें. हैव यू ट्राइड TCG? नॉट येट. वो करना है यार, अभी करना है. TCG करना है. किसी ने मुझे बताया 2000 प्रीमियम जेम्स मिल रहे हैं. अपने को तो पता ही नहीं था. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. मैं एक्चुअली में ना एक बार ज़रा क्वेस्ट कंप्लीट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसकी क्वेस्ट में बड़ा इंटरेस्ट है, वॉन्डर की. ठीक है, उसके बाद TCG खेलेंगे. TCG जा कहाँ रहा है? यही है TCG. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation, goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. Doctor. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Hey, weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? क्या लाइट है पीछे से? क्या लाइट आ रही है? मस्त है ना. Sure, go ahead. A kabuki mono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. और क्या और कितना प्रूफ चाहिए भाई? Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. Xavier. Xavier नहीं, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. YouTube पे देखना Raiden JP Burst. अबे जापानीज वाला कहाँ है? चलो ये देखते हैं. 逃げ道はあります。見切りました。裁きの雷。稲光、すなわち永遠なり。इना भिकारी भाई. ये ले भिकारी नहीं, इना भिकारी. Farewell. Looks like you got all the information you're looking for. Sure, but what's up with you today?
Whatever it is, it seems like it's really troubling you. ये ले भिखारी नहीं, इना भिखारी. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. यार पाइमन अगर 4-5 फुट लंबी और हो जाए ना और लास्ट में दोनों की शादी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा. ऐसे ही एंड होनी चाहिए. लास्ट में बड़ी ग्रैंड वेडिंग हो रही है, सारे आर्कॉन्स और सारे एनपीसीज जितने थे सब के सब आ गए हैं. ठीक है, पाइमन अचानक से 5 फुट 10 इंच की हो गई है, ट्रैवलर के हाइट के बराबर, दोनों की शादी हो रही है. Hey, don't mention it. Alright, let's head off and go meet Nahida. चलो जी नहीदा से मिले. आयाका एंड कचिंग विल किल ट्राई टू किल पॉन. यार आयाका का तुम्हें समझ में आता, मुझे कचिंग का समझ नहीं. कचिंग का भी कोई क्रश व्रश है क्या ट्रैवलर के ऊपर? मुझे याद नहीं. आयाका का तो पता है, वो तो डेफिनेटली कहने की बात है. वो तो 2 मिनट में कूद जाए. Hey, it's them! Akaba, Sawada, you're still here? Indeed we are. If you have a moment. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Obviously. Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? इन कैसे चेंज हो गए? कबूकी मोनो का मेंशन ही नहीं होगा. Unfortunately, we haven't made any real progress. Huh? Oh, of course. एक चीज़ समझ नहीं आई, ये ऑलरेडी कोई चीज़ लिख चुके. जोरो हेलो, वेलकम वेलकम, बहुत टाइम बाद. ये तो अपना ऐसे ऑलरेडी लिख चुका था. अगर उसने जाके अपने आप को डिलीट कर दिया है तो क्या पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई है या आई गेस. कबूकी बन गया आउटसाइडर. I presume you'll want to read mine as well. Here. ऑफ कोर्स. सीधा येलो पार्ट पढ़ते हैं. हाँ
Well, what do you think? Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma. So how about we tell them what we learned? What did you find out? Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Arminoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. These guys are really into this. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. ऑब्वियसली नाइदा भी भूल ही गई होगी. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. Nahida, we're here! Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to Inazuma. अब ये भी गई कौन बालोडियर? The Balladeer? This sounds like some kind of code name. Of course. You look troubled. Is there something you need to tell me? Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. एक मिनट. रुख देवता के बारे में बता देगा इसको. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. और उसने कर तो दिया. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because... well, because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The traveler comes from a world beyond Tevat. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him.
So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Paimon's having a hard time understanding this balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Something else worrying you? Something that you can't share? It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है. क्या समझ नहीं आ रहा इसमें? क्या चीज़ समझ नहीं आई? बताया तो देखो, तो मैं जितना मुझे पता है उतना बताता हूँ. राइडन शोगन ने, ठीक है, 500 साल पहले तलवार बनाने की जो आर्ट है 5 अलग अलग क्लाइंट्स को दी, ठीक है, जो, और उसी टाइम के अराउंड इस राइडन शोगन ने बालाडियर को बनाया था अपनी नोसिस देने के लिए, ताकि वो जो पपेट है वो पपेट राज करे और वो अपनी प्लेनो के थाई में जा सके, ठीक है. लेकिन बालाडियर का जो पपेट था वो ठीक तरीके से नहीं बना, ठीक है. उसको जब उसको नोसिस दी गई तो वो रोने लगा, तो उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया. लेकिन राइडन शोगन ने उसे डिसमेंटल नहीं किया, बस छोड़ दिया कहीं पर, ठीक है. वहाँ पर बालाडियर किसी को मिला, उससे दोस्ती की, फिर वो मर गया, फिर किसी और को मिला, ठीक है. फिर तीसरा बंदा जो मिला वो नीवा था, जो ये दिखा, इसमें नीवा कहानी चल रही है, जिसको डॉक्टर ने मार दिया था, वो नीवा था, ठीक है. तो क्या कहते हैं, फिर इसको ऐसा लगा, इसको बालाडियर को, कि सब लोग इसको मिलकर धोखा दे रहे हैं, इमोशंस कुछ नहीं होते, ठीक है. और इसने क्या किया, पूरे उसको ख़त्म कर दिया. जो राइडन कोकोडेन थे, जो 5 क्लैन्स थे, उनमें से 3 को ख़त्म कर दिया. सिर्फ काजुहा क्लैन बचा, काहिदेहारा क्लैन बचा और आमेनोमा क्लैन बचा, ठीक है. और फिर इसको रिक्रूट कर लिया फटुई ने, और ये बन गया उनका हार्बिंजर. तो अब जब ये मेमोरीज देखी इसने, इरिमिनसुल ने, उसको पता लगा कि डॉक्टर ने एक्चुअली में नीवा को मार दिया था, नीवा ने धोखा नहीं दिया, ठीक है. तो ये अपना नाम क्लियर करने के लिए कि भाई मेरा नाम जो है, लोग बार बार कहते हैं कि कबूकी मोनो या कुनी कुसुशी, इन्होंने इसने बंदे ने जाके मार दिया बाकी क्लैंस को, तो अपना नाम क्लियर कर रहा है कि मुझे कोई ना जाने. नीवा वो छोटा बच्चा था जो बड़ा होकर ये बन गया, जो इंस्पेक्टर बना, हाँ, ठीक है. तो अब इसने अपना नाम डिलीट कर दिया है, तो अब इसको कोई नहीं पहचानता. जैसे रुख देवता डिलीट हो गई, तो अब कोई नहीं जानता रुख देवता कौन है अपने ट्रैवलर के अलावा, ठीक है. तो ये हुआ है. The story makes sense. Every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. देखो जो बता रही है ये चीज़. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look.
Is this a fairy tale? Who wrote it? I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the Balladeer? When combined with the Traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the Balladeer or the Kabuki Mono in other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Smart. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the Balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great idea! And sending the Traveler into Irminsul with the Balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us, the now erased life of the Balladeer. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. समझ में आया नाहिदा ने क्या किया? तो बेसिकली बैलाडियर ने क्या कहा कि बैलाडियर और कबूकी मोनो ये दो नाम अब किसी को याद नहीं रहेंगे, ठीक है? तो बेसिकली वो अपने आप को इरेज करना चाहता था, ठीक है? लेकिन नाहिदा ने बैलाडियर की पूरी स्टोरी को एक मेटाफोर के तरीके से कहीं और लिख लिया. उसने बैलाडियर को बैलाडियर नहीं बोला, उसने उसको ये बोल दिया मॉन्स्टर ड्रेप्ड इन फॉक्स फर, ठीक है? और जो उसके जो बाकी के दोस्त थे उनको उसने फॉक्सेस बोल दिया, फाउंड अ फैमिली ऑफ फॉक्सेस, ठीक है? तो जब इरिमिनसुल से क्या कहते हैं जब इंफॉर्मेशन डिलीट हुई तो बैलाडियर और कबूकी मोनो की डिलीट हुई, लेकिन ये स्टोरी वैसे की वैसी है क्योंकि इरिमिनसुल का ये तो स्टोरी पता नहीं किसके बारे में लिखी हुई है. इरिमिनसुल को थोड़ी पता है कि ये स्टोरी बैलाडियर नाहिदा ने बैलाडियर के बारे में लिखी है. और अब जो ट्रैवलर ने अपनी जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो इन्फॉर्मेशन इस स्टोरी से बिल्कुल मैच करती है. 200 IQ मूव, 200 तो ज़्यादा कम हो गया, 1000 IQ मूव. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree, who had been abandoned by the humans. ये तो कुछ डिफरेंट है. इसमें वॉन्डरर स्कारमुश कौन है? मॉन्स्टर है, किटन है? किटन लग रहा है. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. ये स्टोरी कुछ सेंस नहीं बन रही है. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. अच्छा, मॉन्स्टर द टोरो है. Let's find a way to solve this." किटन है स्कारा. अच्छा अच्छा, समझ गया. The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. Niva. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. Priyanshu Rai, hello, my friend. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames,
and die for your fox kin. The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. ये जो क्या कहते हैं बर्ड है ना, ये बर्ड वो छोटा बच्चा है, नीवा छोटा बच्चा नहीं था. नीवा तो दूसरा 3 बार मिला किसी से, तो दूसरी बार जिससे मिला वो नीवा था, तीसरी बार जिससे मिला स्कारमूश वो बच्चा था छोटा. Never again would it cherish a single creature nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! I remember now. This is not just the balladeer story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. Yes. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. अब याद आ गया ऐसे पूरा. Before he vanished, he confirmed an important detail. That Conria was where your twin first came into this world. इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे याद आ गई भाई? We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own harbinger. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up. How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? देखो कुत्ता है. Take him out for a walk. You got it. Come on, traveler. You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. Solve Nahida's hidden riddle and discover the balladeer's past.
परिणाम फॉक्स कैट बर्ड एंड मॉन्स्टर. ओके. अब कहाँ जाना? ग्रैंड बाजार जाना? ग्रैंड बाजार. यहाँ पे वॉन्डरर घूमता हुआ मिल जाएगा शायद. We're here! What should we eat first? Hey, are you gonna answer or what? Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. What is it? Have you figured it all out? अच्छा, आप खुद को डिलीट नहीं कर सकते एग्जिस्टेंस ने. हाँ, रुख देवता ने खुद को डिलीट नहीं किया था. नाहिदा की हेल्प लगी थी डिलीट करने के लिए. तो अगर बॉलेडियर ने भी कुछ किया है स्कारामूश ने, तो उसने भी किसी ना किसी की किसी हेल्प से किया होगा. वही एग्जैक्टली द स्टोरी इज गेटिंग इंटरेस्टिंग. सॉरी. Why'd you jump up all of a sudden? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. मैंने बोला था घूमता हुआ मिल जाएगा. Hey, wait! You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. अभी भी इसको विजन नहीं मिली है. विजन नहीं है इसके पास अभी. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsettias, and I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsettias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Okay, stay out of sight. Don't let him see you.
Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsetias? Isn't that a bit too cruel? Oh, alright. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? He spotted us! You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. Have we met before? No, we haven't met. But you know me? I have no recollection. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. A puppet? What makes you think that? Huh? You were right! The look on his face! I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Then let's return to the city. The Kabuki Mono's finale. गायब हो गया या है? Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know, you should go live your life. But I don't... No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. All right, done. Thanks for waiting for me. We can go now. Interesting. Ashk.
What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. You say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? बड़ा कैजुअली पूछ रहा है. मुझे कोई ऐसी रेवलेशन दे तो मेरा दिमाग फट के चार हो जाए. Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street! He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. What a weird situation. Lesser Lord Kusanali, as the God of Wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Except maybe these sins that can never be undone. Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear.
Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Deja vu. Oh, good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. No matter what lies ahead, it's time to get ready. वाह क्या 3 कैरेक्टर है यहाँ पे, मम्मी, बेबी और भाई के पास वो तो है नहीं विजन, तो लड़ेगा कैसे? Oof. This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. पर कौन सी memories? तो सब रिमिंसू से डिलीट हो गई ना? These memories will show you the raw truth, but be aware that enemies may react just like in the real world. Please be careful. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. you don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. All right. Thanks. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Before reset. हाँ तो उसने तो पास्ट में जाके अपनी मेमोरीज चेंज की है ना, तो सारी डिलीट हो चुकी हैं. अब कौन सी मेमोरीज रह गई हैं? Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Huh. Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Torichio's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the Balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. हाँ, you can't erase yourself. हाँ, वही तो हो सकता है इस वजह से erase हुई, memories रह गई हो. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The Balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name.
Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabuki Mono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. यहाँ से तो मैं आया हूँ. अच्छा स्पॉइलर नहीं दोगे, अच्छी बात है यार, मैं दो स्पॉइलर. कुछ तो गिरा पीछे. Huh? What are we doing back here? Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. ये वो चाइल्ड है जो क्या कहते हैं ना, छोटा सा किटन या जो भी था, ये वो चाइल्ड है जो मर जाता है. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. और इस बच्चे को कुछ ना कोई बीमारी होती है, ये इसके लिए दवाई लेने जाता है, लेकिन जब तक वापस आता है बच्चा मर चुका होता है. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. Then mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. और ये बच्चा मर जाता है और ये इसकी सटक जाती है. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! मैंने पहले बोला था ना, इसकी स्टोरी बड़ी ट्रैजिक है बालाडियर की. You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. पहले हम यहाँ से नीचे गए थे, ये बंद हो गया. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron Jester. will. पहला फतूही हार्बिंजर. You could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? The long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Illusion shut! Rain outlines your fate. Water!
dream work. There is no escape. Stay right there. Torn to oblivion. Ha! Ha! Illusion shattered. Send this quickly. Let me weave you a verb. Everybody stand back! There is no escape! Ha! Ha! Now you shall perish! Ha! Illusion shattered! Shine down! Let's light it up! No, my sword! Let's end this quickly. Torn to oblivion! This isn't good. Ha! Ha! There is no escape! Ha! Teamwork is dreamwork! Rain cutter! Illusion shattered! Ha! Now you shall perish! चैनलिंग गई मेरी, मर गई बेचारी। अबे और भी आ गए। Torn to oblivion! Shine down! Everybody stand back! Witness the power of... कहाँ गए? गए? This place is है सेकेंडरी टीम है, मैं इसको प्राइमरी टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल तो सेकेंडरी है। Paimon knows this place. It's the delusion factory in Inazuma. In the original version of events, the traveler once encountered the balladeer here. Such a creepy atmosphere. And so familiar. Hey, look over there! Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. वाह, कितने टाइम बाद इसको देख रहे हैं यहाँ पे। What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. स्कारा पुल कर लो, बहुत अच्छा DPS है। एंड चार्ज शॉट्स बिना स्टेमिना कंज्यूम किए करता है। अरे जिंदा नहीं हुई, ये पास मेमोरी देख रहा है इसकी, ये पास मेमोरी है कि यहाँ पर कैसे आया था ये। यार वही है, मैं कितने बिल्ड करूँगा कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर बिल्ड करूँ। राइडन बिल्ड कर रहा हूँ, फिर अब स्कारा बिल्ड करना शुरू कर दूँ। राइडन पे फोकस रखना है यार मुझे। What a sharp tongue you have. हम जैसे प्लेयर्स के लिए प्रीमो जेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सोच के खर्च करने पड़ते हैं। Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. मैं भी पुल करूँगा, मेरा वॉन्डर निकल जाएगा, इतना तो कंफर्म है। वॉन्डर निकल जाएगा, लेकिन फिर मेरी सिन्योरा की लिए पिटी मर जाएगी मेरी। इजी टू बिल्ड है। भाई तुमसे यूई में बिल्ड नहीं हो रही, मेरे से भी कैरेक्टर बिल्ड नहीं हो रहे यार, बहुत मुश्किल होता है आर्टिफैक्ट पुल करना। Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible. And don't let your emotions get in the way. ये सिन्योरा के मरने से पहले की वो है, सिन्योरा की पिटी नहीं, राइडन की पिटी, सॉरी। Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way.
You and Child never failed to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. अरे सीनियर कैरेक्टर नहीं, मेरा गलती मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मुझे माफ कर दो. सीनियर नहीं, राइडन बोलने वाला था. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. वो तो शुरुआत से प्रॉब्लम है इसकी. See you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Yes. Please don't worry about me. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish. Don't tell me मुझे हमेशा लड़ना पड़ेगा. There is no escape. अबे यार, ये बहुत जल्दी मरती है भाई. इसको कुछ तो मुझे करना पड़ेगा. और यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं कैरेक्टर गलत लेकर आया हूँ. Now you shall perish. Illusion shattered. Blink. Shine down. Teamwork is dreamwork. Let me weave you a verse. आ गई. Torn to oblivion. मैंने एक्चुअली शानलिंग को बिल्कुल भी बिल्ड नहीं किया हुआ. 7000 स्किल में कोई आर्टिफैक्ट नहीं, उसके पास कोई वेपन नहीं है, वो बस रिएक्शन के लिए है वहाँ पे. Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. भाई मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है. बस मेरे पास ये ना रिसोर्सेज नहीं है, मैं किस किस को बढ़ाऊँ, मैं किस किस को बड़ा करूँ, इतने बच्चे कैसे पालूँ मैं. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. मुझे बहुत खुशी है कि ये लोग बैकग्राउंड स्टोरी बता रहे हैं कि पहले क्या हुआ था. डॉक्टर प्लेबल कैरेक्टर काश कभी होगा. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained.
That was gracefully worded. Ever wonder what they'd think if they knew that nothing matters to you apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? The doctors तूने बोलना का समझ नहीं आया भाई क्या कर रहे हो? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? अगर स्कारा अपने अल्टीमेट स्केल में अपने रोबोट को यूज़ करता पर या फिर वो स्कारामूश नहीं है ना, वॉन्डरर है. Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. अच्छा, the way he speaks, हाँ. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस उसकी विजन अलग है. पहली बात तो पुराने वाले के भाई इलेक्ट्रो पावर थी, ये एनिमो वाला है, ऑल्दो उसको विजन अब तक मिली नहीं है. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. स्कारा के पास विजन नहीं, डिल्यूशन था. उसका डिल्यूशन भी नहीं था. उसके पास जो इलेक्ट्रो पावर्स थी वो ऑलरेडी उसकी खुद की थी, क्योंकि उसको राइडेन शोगन का पपेट बनना था ना, तो ही वाज बॉर्न विद द पावर्स. Are you sure you want to do this? भाई कोई भाई को बताओ डिल्यूशन क्या होता है. I've lived with a void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. मतलब सच में राइडेन शोगन ने क्या कहते हैं बनाया था इसको एज अ प्रोटोटाइप. ठीक है, फिर वो प्रोटोटाइप ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब जो दूसरी जो राइडेन शोगन पपेट है फिर वो बनाया गया बाद में. तभी तो देखने में राइडेन शोगन की तरह लगता है. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. Cutscene. You have made your decision. Now, take this. भाई ने टोपी उतार दी अपनी.
him free. अब देखो. A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is my... Is he alright? लो जी आ गया इसका. डोंट टेल मी से फिर से लड़ना पड़ेगा. All worthless dross will be purged. That's विजन मिल रही है. This won't be the end. ओ भाई को विजन मिल गई. पहली बार विजन मिलना देख रहे हैं कि विजन कैसे मिलती है. अब लड़ेंगे हम इसकी तरफ से. This is trying my patience. Have you got any more stupid questions? Feeble human! Squall and Fury! Quit following me! The wind rises! Insignificant pest! Squall and Fury! At my command, you shall fall! Cry louder! Feeble human! Behold! ये तो लग रहा है इसी से लड़ने के लिए बनाया हुआ है. My endless cycle begins! The wind rises. Perish! वाह भाई स्कारा मिल गया. नहीं मिला नहीं है. लक्ष्य गेमिंग अब सारे आगे पीछे से. Imbecile! Get out of my sight. लो अब वॉन्डर के पास इसकी सारी मेमोरीज आ गई है ना वॉलेडियर की. तो अब इसका एटीट्यूड ही वॉलेडियर जैसा हो गया. जिसका एटीट्यूड था ना पीछे वॉन्डर का बड़ा इजी गोइंग सा बड़ा इस सॉफ्ट सा. Disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. लो आ गए वापस. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. अच्छा मैं बेडरूम टीवी हूँ. अच्छा. I am. You sound like you're concerned about me. But don't worry.
Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. तो मतलब कि इसके पास इसकी मेमोरीज आ गई हैं, लेकिन अभी भी जो कबूकी मोनो जो बैलेडियर था, मैं 4 अकाउंट यूज़ करता हूँ अच्छा तो जो बैलेडियर था उसकी मेमोरीज बाकी सबके दिमाग से हट चुकी है, मतलब कि फटुई भी इसको पहचानेंगे नहीं कौन है ये. ऐसा क्या? मी माई सेल्फ बट नॉट आई. वाह क्या बात है. Time to act. कुछ तो दो, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा बाहर. कोई प्रेशियस चेस्ट वगैरह कुछ तो मिलनी चाहिए यार. अच्छा टीवी पे देख रहा था, फ़ोन से कमेंट कर रहा था. वेंटी ने विजन दे दी. वेंटी विजन नहीं देता, ये बात हमेशा ध्यान रखना. जो विजन्स होती है ना वो आर्कॉन नहीं देते. आर्कॉन्स विजन नहीं देते, ये कई बार कंफर्म हो चुका है. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the 6th is. So, you're quitting the Fatui for good? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Venti stealing Archon's child. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you are looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? शाओ एंड स्कारा. शाओ को भी क्या कहते हैं, शाओ को वेंटी की फ्लूट ने बचा लिया था, वरना शाओ भी क्या कहते हैं अपने कारमा के वेट में मर जाता जैसे बाकी यक्षस मरे. Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? आपको शाओ की स्टोरी पता है? हाँ शाओ की स्टोरी पता है मुझे, बताया ना मैंने कि शाओ अपने क्या कहते हैं शाओ का जो कारमा बिल्ड हो रहा था ईऑन्स और हज़ारों सालों तक, जो उसने राक्षस मारे, जो डीमंस मारे, उसका कारमा बिल्ड हो रहा था उसको, और वो बाकी के जो उसके ब्रदर सिस्टर्स थे शाओ के, वो उसके अंदर ही क्या कहते हैं पागल हो गए थे. तो शाओ भी पागल होने वाला था, बट देन उसे वेंटी की फ्लूट सुनाई थी. वेंटी फ्लूट प्ले कर रहा था, और उस फ्लूट को सुन के जो उसके माइंड का जो प्रेशर था ना थोड़ा रिलीज़ हुआ, तो वो बच गया. तो बेसिकली वेंटी ने शाओ को बचा लिया. अब वो चाहे जानबूझ के बचाया या ऐसी बाय चांस हो गया, ये नहीं पता. In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things,
But I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered. Including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. मैं सारे मिशंस में जो बात होता है वो स्किप करता हूँ बट मेन वाला कभी नहीं करता. मैं तो ऑलमोस्ट सबकी कोशिश करता हूँ सारा सुनूं क्योंकि मुझे यार स्टोरी काफ़ी पसंद है. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. वो चला गया. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? न्यू नेम मैंने इसका नाम सोचा हुआ है. बताओ क्या naam रखने वाला हूँ. Paimon wants to pick an ugly nickname for you too. Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. और इस नाम को रखने का कोई रीज़न नहीं है जो नाम मैं रखने वाला हूँ. The traveler in Paimon has बस मेरे helped you a lot. दिमाग में अचानक से आया कि ये नाम रख Decide देता on हूँ. a new name. Maybe you can ask them for ideas. No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. Have you got anything? Name change rules. You can obtain the item an appellative stroke from which Arkhon Quest interluded inversion of Genesis, which will allow you to change Eons Adrift Wanderer name. Please take note that some names cannot be utilized in this change. Once you have renamed this character, some interfaces in the game going forward will display the name that you have chosen. There is a limit on the number of times you can rename this character, so do it with care. Disclaimer: Travelers, please ensure that you follow our terms of service while using this function to create a healthy gaming environment. Okay. मैं इसका नाम रखने वाला हूँ बबलू. कैसा है?
बताओ भाई बताओ कैसा है नाम? बबलू। अरे इतना अच्छा नाम है यार बबलू, हद है। बंटी। बंटी अच्छा नाम है। अरे और क्या नाम रखूं यार इसका? इतना अच्छा ना, बंटी, बबलू। पोपट ना भाई, पपेट से मिलता जुलता नाम रखना, पोपट। मैं इसका नाम ही रख दूं, इसको इसका पुराना नाम दे दूं। ये चाह रहा है ना इसका पुराने नाम से इसको कोई याद ना रखे। बालेडियर, बैलेडियर या फिर या स्कारडियर। बैलेडियर नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? स्कारडियर कैसा? स्कारडियर स्कारडियर या बालामूश, राइडन किलर। नहीं, बैलेडियर रख के देखता हूँ क्योंकि मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है, बैलेडियर। हो गया। I have no need for these names anymore. कुछ तो डायलॉग होना चाहिए था। अच्छा नहीं हुआ? Okay. अच्छा ओके ओके ओके। Have you got anything? तो पुराना अगर कोई नाम दिया तो नहीं होगा, समझ गया। ए कर दो, वो तो बनना चाहता था ये। चलो उसको वो नाम देते हैं जिस नाम के लिए हमेशा से क्या कहते हैं बनाया गया था। राइडन बैलेडियर। अबे या फिर राइडन बैलेडियर, तो फटुई ने इसको नाम दिया था। राइडन के आगे क्या लिखूं? या फिर राइडन स्कारा, नो स्पेस, राइडन स्कारा। Are you sure? प्रोटोटाइप 1 नहीं। यस। Oh, all right. If you say so. मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे कौन सा क्या ये फर्क पड़ना है। Now you have a name of your own. What about a nickname? Are you done yet? Take your time. I don't need to see you again until you've thought of one. Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? The doctor, at least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. कैसे? I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. What's that look for? Don't make that face. I know what I'm doing. That day will come. मुझे लगता है स्टोरी के एंड तक बचेगा नहीं जिंदा।
वेलकम टू द वेंजेंस ग्रुप. All right, we're done here. यूला तो फालतू में वेंजेंस करती रहती है. उसको वेंजेंस का पॉइंट क्या है? Goodbye, wise deity. ओह, वाइज डेडी. आर्कन क्वेस्ट में कितने प्रीमोस आए हैं यार? 60 प्रीमोस के राउंड मिलते हैं. 60 के राउंड हो जाते हैं. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. So we can finally go eat? Paimon is starving. भाई यार वो तो देखो प्रीमोस के लिए नहीं की जाती क्वेस्ट वगैरह. स्पेशली आर्कन क्वेस्ट स्टोरी फॉरवर्ड करने के लिए की जाती है. प्रीमोस तो बस मिल रहे हैं. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. अचीवमेंट तो 3 मिले हैं अभी. बीच में अचीवमेंट 3 अचीवमेंट हुए हैं अब तक. मेरे ख्याल से इसके बाद भी एक अचीवमेंट आएगा. डन. ये भी कट सीन आएगा कोई. I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold. वाह. नाम अच्छा दिया भाई मैंने इसको. राइडेंस का रहा. वॉक इन मूंग और मंथ्स की जगह वीक में 3 के प्रीमोस देता तो सही रहता. हाँ हाँ क्यों नहीं. क्यों नहीं. रिटर्न टू द रेस्टिंग प्लेस. किसका रेस्टिंग प्लेस पे? Body and mind. अच्छा ओयो में जाने की बात कर रहा है. ओयो वापस. ये पाइमॉन और ट्रैवलर का ओयो रूम जिसमें एक छोटा सा बेड है. It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow, great! Huh? Look at the vase. Did someone break it while they were cleaning the room or something? But Paimon doesn't remember there being a cleaner. पाइमॉन ने ब्रेक किया था. इसको याद नहीं क्या? पाइमॉन सच में अननोन गॉड है क्या? नहीं नहीं. मोस्ट क्लोज थ्योरी जो है वो ये है कि पाइमॉन एक सीली है. You sound lost and confused. कौन है? कौन है? I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. ये किसकी आवाज है? Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else,
Who can say? ये क्या सारित्सा है? स्नेजनाया से? ये क्या भाई, कौन है? When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate. भैया शाम को 7 बजे स्ट्रीम किया करोगे अच्छा सा गेम। मैं शाम को आता हूँ स्ट्रीम करने के लिए, 8:30 बजे आता हूँ। 8:30 बजे इसलिए आता हूँ, 7 बजे इसलिए नहीं आता। आने को 7 बजे आ सकता हूँ, लेकिन 7 बजे इसलिए नहीं आ सकता। हाइड्रो आर्कॉन है ये, तो हाइड्रो आर्कॉन कैसे बात कर रही है यहाँ पर? यार हो सकता है आगे का जो फाउंटेन आने वाला है उसको सेटअप कर रही हो, बट एनीवेज लक्ष्य को क्या बता रहा था। हाँ, तो मैं शाम को आता हूँ, मैं 8:30 बजे करता हूँ, ठीक है। और 8:30 बजे से मैं आगे गेम खेलता हूँ, अपनी मनपसंद गेम कोई भी होती है। फिलहाल तो वो खेल रहा हूँ मैं, टूम रेडर, तो वो खेल रहा हूँ मैं 8:30 बजे इसलिए क्योंकि 8 बजे मेरा डिनर का टाइम होता है। अगर मैं 7 बजे आ जाऊँगा तो फिर 8 बजे डिनर के लिए उठना पड़ेगा। मेरा 8 बजे डिनर फिक्स होता है, तो 8 बजे डिनर करके 8:30 बजे मैं अपना आराम से स्टार्ट कर सकता हूँ गेम खेलना। Like a vase that falls to the ground, whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? तो लक्ष्य क्या कहते हैं, तुमने डिस्कॉर्ड तो ज्वाइन किया हुआ है, डिस्कॉर्ड के ऊपर नोटिफिकेशन जाती है। तुमने चैनल को भी अगर बेल आइकॉन ऑन किया हुआ है तो मैं शाम को जब भी ऑनलाइन जाऊँगा तुम्हारे पास आता है, मतलब नोटिफिकेशन आनी चाहिए। मैं 11 बजे करता हूँ, क्या 11 बजे करता हूँ? अच्छा डिनर मैं भी एक टाइम पे इतना लेट खाया करता था, 9:30, 10, 11 बजे। अब मैंने अपना डिनर फिक्स किया हुआ है, 8 बजे में डिनर करना होता है। History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. The voice has disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Anyway, that face is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? मैं अल्ट्रा प्रतीक से डिस्कॉर्ड मैसेज करते हैं। हाँ It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. लो जी, इंटरल्यूड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट आर्कॉन क्वेस्ट का, फाउंटेन। 60 प्रीमोज ही मिल गए हैं, 22,000 मोरा मिल गया है। कितने मेरे पास हो गए हैं ज़रा देखूं, प्रीमोस कितने हो गए हैं। तो मेरे पास हो गए हैं 2890 प्रीमोस एंड 4 विशेस ऐसे अलग से, ठीक है। वेस अभी भी टूटा हुआ है नीचे। हाँ तो यार ये तो हो गया। अब क्या बचा है? अब वो बची है, क्या कहते हैं, जीनियस इन्वोकेशन, TCG। वैसे इसका नाम बार बार हम चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि आई कैन चेंज हिज नेम ना, दोबारा से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा बार नहीं। ऐसा ही है। TCG ट्राई नहीं करोगे? हाँ TCG ट्राई करूँगा, बिल्कुल करूँगा TCG ट्राई। चलते हैं TCG के पास, चलो देखे तो सही क्या बवाल है। अच्छा तो मॉन्स्टर जाना पड़ेगा, वाह। वैसे यार मुझे ना अभी थोड़ा ब्रेक तो लेना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं स्ट्रीम करते हुए, 3 घंटे 13 मिनट टू बी प्रिसाइज। तो मेरे ख्याल से TCG को आगे के लिए रखते हैं,
रात को ऑनलाइन आऊँगा तब आना, वो खेलेंगे, क्या कहते हैं, टूम रेडर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है लक्ष्य, रात को आ जाना भाई, अगर तुम्हें रात की गेम्स देखनी है तो। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही यार, थोड़ा सा मुझे भूख भी लग रही है, जिम जाने का भी टाइम होने वाला है मेरा, तो जिम भी जाऊँगा, कुछ खाऊँगा भी। कितना कम क्वेस्ट बचा है आप पे, क्योंकि मैं करता रहता हूँ ना क्वेस्ट, ये तो है, मैं क्वेस्ट करता रहता हूँ इसलिए। ठीक है, चलो यार रात को मिलते हैं सब लोग। नहीं मुझको टूम रेडर पसंद नहीं। अब यार देखो, टूम रेडर अच्छी गेम है, पसंद क्यों नहीं है। अभी टूम रेडर के बाद मतलब खत्म होने वाली है, टूम रेडर खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं दूसरी गेम खेलूंगा, गेम्स में मेरे पास बहुत सारी हैं। ठीक है, चलो यार, ठीक है गाइस, कल मिलते हैं। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय। या तो कल मिलते हैं, रात को मिलते हैं, रात को आ जाना, पसंद नहीं भी है तो खाली बात तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, चलो ओके।